हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना 100 क्वेश्चन का सीरीज। इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन के छोड़ के बाकी जितने भी चैप्टर है रिप्रोडक्शन में, चाहे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हो गया, चाहे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हो गया, इसमें सारे चैप्टर को कवर करेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर रहेगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म नोन एज? फर्स्ट इज लाइफ स्पैन, सेकेंड सेनेसेंस, सी एज, डी लाइफ साइकिल। तो करेक्ट आंसर इज ए, लाइफ स्पैन। Question number 2. Reproduction is defined as a biological process of organisms giving rise to young ones or offspring. Option A is correct answer. Question number 3. What is the term used to describe genetic and morphologic similarities between different individuals? Option A, offspring. Option B, clone. Option C, gamete. Option D, cell. Correct answer is clone. Option B. Question number 4. What type of reproduction does the image depict? Option A, vegetative propagation. Option B, fragmentation. Option C, budding. Option D, binary fission. Option D is correct answer, binary fission. Question number 5. Which plant is the terror of Bengal? Option A, Cereus. Option B, corpse plant. Option C, water hyacinth. Option D, cactus. Correct answer is C, water hyacinth. Question 6. From where do rhizomes arise? Option A, root. Option B, leaves. Option C, buds. Option D, nodes. Correct answer is option D, nodes. Question number 7. How does bryophyllum reproduce? Option A, leaves. Option B, stem. Option C, roots. Option D, nodes. Option A is correct answer, any leaves. Question number 8. Sexual reproduction is better than asexual reproduction. Option B is correct answer, true. Question number 9. Fusion of gametes from a zygote. Option A, false. Option B, true. Option B is the correct answer, true. Question number 10. What is the period of growth known as in plant? Option A, senescence. Option B, juvenile phase. Option C, reproductive phase. Option D, vegetative phase. Correct answer is option D, vegetative phase. नाउ हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोस बाइनरी फिजन? ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी हाइड्रा, ऑप्शन सी ईस्ट, ऑप्शन डी रिंगवॉर्म। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, अमीबा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। हाउ डज हाइड्रा रिप्रोड्यूस? ऑप्शन ए गैम्यूल, ऑप्शन बी बडिंग, ऑप्शन सी कोनिडिया, ऑप्शन डी जूस्पोर्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए गैम्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। विच ऑर्गेनिज्म अंडरगोज द फिनोमिनन ऑफ इंसिस्टेशन? ऑप्शन ए प्लांट्स, ऑप्शन बी अमीबा, ऑप्शन सी रिंगवॉर्म, ऑप्शन डी फंजाई। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अमीबा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। अमीबा अंडरगो स्पोरुलेशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट डज द फॉलोइंग इमेज डिपिक्ट? ऑप्शन ए बर्ड्स इन ईस्ट, ऑप्शन बी जूस्पोर्स इन क्लाइडोमोनास, ऑप्शन सी कोनिडिया इन पेनिसिलियम, ऑप्शन डी गैम्यूल इन स्पॉन्जेस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी गैम्यूल इन स्पॉन्जेस। क्वेश्चन नंबर 16. Which one of the following is an example of a runner? Option A, Lolium multiflorum. Option B, Narcissus. Option C, Bryophyllum digramontianum. Option D, Kalanchoe. Option A is correct answer, Lolium multiflorum. Question number 17. What is budding also called in East? Option A, archaeocytes. Option B, vegetative propagation. Option C, torulation. Option D, fragmentation. Option C is correct answer, torulation. Question number 18. Which of the following is not an example of vegetative propagation? Option A, offset. Option B, sucker. Option C, rhizome. Option D, fragmentation. The correct answer is option D, fragmentation. Question number 19. Which of the following is commonly known as walking fern? Option A, kalanchoe. Option B, Saint Paulia. Option C, begonia. Option D, adiantum caudatum. Option D is correct answer, adiantum caudatum. Question number 10. Offset can also be described as option A, thick runner. Option B, thin tuber. Option C, long rhizome. Option D, short sucker. Option A is correct answer, thick runner. अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 21. बाइनरी फ्यूजन आर ऑफ टू टाइप्स. ऑप्शन ए इज ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ट्रू. क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट आर नॉन मोटाइल फंगल स्पोर्स आर आल्सो कॉल्ड एज? ऑप्शन ए गैम्यूल्स, ऑप्शन बी नोड्स, ऑप्शन सी कोनिडिया, ऑप्शन डी जूस्पोर्स.
Correct answer is option C, conidia. Question number 23. Which type of vegetative propagation does the following image depict? Option number A, rhizome. Option B, tuber. Option C, bulbils. Option D, leaves. Option B is correct answer, tuber. Question number 24. Which vegetative propagation does the following image depict? Option A, bi-leaves. Option B, bi-nodes. Option C, bi-spores. Option D, bi-flower buds. Option A is correct answer, bi-leaves. Question number 25. Which of the following is a vegetative propagation by subaerial stem? Option A, tuber. Option B, rhizome. Option C, bulbils. Option D, sucker. Option D is correct answer, sucker. Question number 26. Which of the following is an example of a bulb? Option A, tulip. Option B, oxalis. Option C, bryophyllum diagramontianum. Option D, colenchoi. Option A is correct answer, tulip. Question number 27. Which of the following is not an example of subaerial vegetative propagation? Option A, sucker. Option B, offset. Option C, runner. Option D, bulbil. Option D is correct answer, bulbils. Question number 28. How does a starfish reproduce? Option A, lay eggs. Option B, budding. Option C, binary fission. Option D, fragmentation. Option C is correct answer, binary fission. Question number 29. How are male honeybees born? Option A, parthenogenesis. Option B, fragmentation. Option C, egg. Option D, spores. Correct answer is option A, parthenogenesis. Question number 30. Asexual reproduction produces offspring with variation. Option A, false. Option B, true. Correct answer is option A, false. Question number 31. What is sexual reproduction? Option A, fusion of male and female gamete. Option B, fusion of male and male gamete. Option C, fusion of female and female gamete. Option D, either a male or female gamete. Option A is correct answer, fusion of a male and female gamete. Question number 32. What is phase when the organism is old enough to reproduce known as? Option A, juvenile phase. Option B, vegetative phase. Option C, senescence. Option D, reproductive phase. Option D is correct answer, reproductive phase. Question number 33. In which plant species is it difficult to define the different phases? Juvenile, reproductive phase. Option A, biennial. Option B, annual. Option C, perennial. Option D, seasonal. Option C is correct answer, perennial. Question number 34. Which type of plant flower only once? Option A, monocarpic. Option B, polycarpic. Option C, vivipary. Option D, unicarpic. Option A is correct answer, monocarpic. Question number 35. Which type of flowers repeatedly? Option A, polypary. Option B, vivipary. Option C, polycarpic. Option D, monocarpic. Option C is correct answer, polycarpic. Question number 36. What are the three phases in life cycle? In order बताना है. Option D is correct answer, juvenile, reproductive, senescence. Question number 37. Name the sequence in which sexual reproduction is divided into. Option B is correct answer, pre-fertilization, fertilization, post-fertilization. Question number 38. Which factor is responsible for the changes in the three phase in a life cycle? Option A, blood. Option B, hormones. Option C, respiration. Option D, nervous system. Option B is correct answer, hormones. Question number 39. What process does the image show? Option A, parthenogenesis. Option B, fertilization. Option C, torulation. Option D, sporulation. Option B is correct answer, fertilization. Question number 40. Sexual reproduction is a fast process. Option A, false. Option B, true. Option A is correct answer, false. अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्वेश्चन नंबर 41. What are the two main pre-fertilization events? Option B is correct answer, gamete transfer and gametogenesis. Question number 42. Gametes are diploid. Option A, false. Option B, true. Option A is correct answer, false. Question number 43. The male gamete is also called as. Option A, anthrazoids. Option B, egg. Option C, isogametes. Option D, fucus. Correct answer is option A, anthrazoids. Question number 44. What are the male organs in a flowering plant called? Option A, carpel. Option B, petals. Option C, ovary. Option D, stamen. Option D is correct answer, stamen. Question number 5.
Cucurbits and coconuts are example of. Option A polycious, option B dioecious, option C trioecious, option D monoecious. Option D is correct answer, monoecious. Question number 46. Which of the following is an example of unisexual organism? Option A earthworm, option B cockroach, option C tapeworm, option D leech. Option B is correct answer, cockroach. Question number 37. Gametes in all dash species are of two types. Option A heterogametic, option B homogametic, option C monogametic, option D polygametic. Option A is correct answer, heterogametic. Question number 48. What are the cell in diploid organism that undergo meiosis called? Option A mitocytes, option B myocytes, option C polygamete, option D gametes. Option B is correct answer, myocytes. Question number 49. Which structure in plant carries the male organ? Option A sperm, option B ovule, option C pollen grain, option D spores. Option C is correct answer, pollen grain. Question number 10. What is shown in the following image? Option A ovaries, option B stamen, option C anther, option D filament. Option A is correct answer, ovaries. Now अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. What is syngamy? Option A parthenogenesis, option B gamete transfer, option C fertilization, option D gametogenesis. Option C is correct answer, fertilization. Question number 52. What is the most important event in sexual reproduction? Option A fusion of gametes, option B secondary sexual organ, option C temperature, option D environmental factors. Option A is correct answer, fusion of gametes. Question number 53. The parthenogenesis is called as. Option A fertilization, option B syngamy, option C virgin birth, option D fusion. Option C is correct answer, virgin birth. Question number 54. Parthenogenesis avoid wastage of germ plasm. Option A true, option B false. Option A is correct answer, true. Question number 55. Dash is retained throughout generation in parthenogenesis. Option A phenotype, option B genotype, option C age, option D generation. Option B is correct answer, genotype. Question number 56. What is the disadvantage of parthenogenesis? Option A wastage of germ plasm, option B retention of genotype, option C lack of adaptability, option D variety in population. Option C is correct answer, lack of adaptability. Question number 57. Where does syngamy occur? Option A terrestrial, option B water, option C outside, option D internally. Option D is correct answer, internally. Question number 58. How are the non-motile pollen grains carried to the female gamete? Option A insect, option B pollen tube, option C anther, option D stalk. Option B is correct answer, pollen tube. Question number 59. In which of the following does syngamy occur inside? Option A algae, option B amphibians, option C fishes, option D humans. Option D is correct answer, humans. Question number 60. External fertilization is safe. Option A false, option B true. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फॉल्स. अब हम नेक्स्ट टॉपिक की क्वेश्चन लेते हैं. पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्वेश्चन नंबर 61. व्हाट इज द इवेंट आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन कॉल्ड? ऑप्शन ए प्री फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन बी पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन डी गैमेटोजेनेसिस. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फर्टिलाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 62. जाइगोट डिवाइड बाय डैश टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स. ऑप्शन ए माइटोसिस, ऑप्शन बी मियोसिस, option C fragmentation, option D sporulation. Correct answer is option B meiosis. Question number 63. What is development of embryo called? Option A fertilization, option B syngamy, option C parthenogenesis, option D embryogenesis. Option D is correct answer, embryogenesis. Question number 64. What are animals in which zygote development happen outside the body? Option A viviparous, option B oviparous, option C reptiles, option D birds. Correct answer is oviparous.
Question number 65. What are animals in which zygote formation takes place in the body called? Option A, oviparous. Option B, viviparous. Option C, humans. Option D, whales. Option B is correct answer, viviparous. Question number 66. Oviparous animal lay eggs. That is true. Option A. Question number 67. Chances of survival are more for dash animals. Option A, terrestrial. Option B, oviparous. Option C, viviparous. Option D, aerial. Option C is correct answer, viviparous. Question number 68. In flowering plants, where is the zygote formed? Option A, ovule. Option B, pollen tube. Option C, anther. Option D, stalk. Option A is correct answer, ovule. Question number 69. What does the zygote develop into? Option A, embryo. Option B, baby. Option C, morula. Option D, human. Option A is correct answer, embryo. Question number 70. What is thick wall developed on a fruit called? Option A, parenchyma. Option B, hilum. Option C, pleurae. Option D, pericarp. Option D is correct answer, pericarp. Now अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. क्वेश्चन नंबर 71. What is reproductive unit in angiosperm? Option A, flowers. Option B, stalk. Option C, pedicels. Option D, leaf. Option A is correct answer, flowers. Question number 72. Fruits and seeds are formed before fertilization. That is false. Option B is correct answer. Question number 73. What are the four walls of the flower arranged on? Option A, ovaries. Option B, stem. Option C, petals. Option D, thalamus. Option D is correct answer, thalamus. Question number 74. Why are petals unique in shape, order, color, etc.? Option A, attraction. Option B, pollination. Option C, survival. Option D, protection. Option B is correct answer, pollination. Question number 75. What is collection of sepals? Option A, calyx. Option B, corolla. Option C, petals. Option D, style. Correct answer is option A, calyx. Question number 76. Cross pollination offers variation. Option A, true. Option B, false. Option A is correct answer, true. Question number 77. What does the following picture depict? Option A, gynosium. Option B, androecium. Option C, self-pollination. Option D, cross-pollination. Option A is correct answer, gynosium. Question number 78. Anther and filaments from the dash. Option A, gynosium. Option B, calyx. Option C, androecium. Option D, corolla. Correct answer is option C, androecium. Question number 79. What is self-pollination? Option B is correct answer. Pollens of the flower falling on stigma of the same flower. Question number 80. What does the androecium produce? Option A, spores. Option B, microspores. Option C, egg. Option D, ovules. Option B is correct answer, microspores. Now हम next topic की बात करते हैं, structure of stem. Question number 81. What is androecium? Option A, stamen. Option B, carpels. Option C, corolla. Option D, sepals. Option A is correct answer, stamens. Question number 82. Stamens are the male reproductive structure. That is true. Option A is correct answer. Question number 83. What does the blue part stand for? Option A, ovaries. Option B, filament. Option C, anther. Option D, thalamus. Option C is correct answer, anther. Question number 84. What are the red spots in the picture? Option A, pollen sac. Option B, pollen grains. Option C, eggs. Option D, dirt. Option B is correct answer, pollen grains. Question number 85. In Malvaceae, anthers are dash. Option A, dithecous. Option B, trithecous. Option C, polythecous. Option D, monothecous. Option D is correct answer, monothecous. Question number 86. The two lobes of the anther are attracted toward by a sterile tissue. Option A, spongy. Option B, parenchymatous. Option C, sclerenchyma. Option D, pedicel.
ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, पैरेन्काइमाटस। क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट डज द कनेक्टिव पोजेजेस? ऑप्शन ए वैस्कुलर स्टैंड, ऑप्शन बी पैरेन्काइमा, ऑप्शन सी स्पॉन्जी सेल्स, ऑप्शन डी कोरोला। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, वैस्कुलर स्टैंड। क्वेश्चन नंबर 88, हाउ डू द pollen grain break open from the pollen sac? ऑप्शन ए along the connective, ऑप्शन बी line of dehiscence, ऑप्शन सी grooves, ऑप्शन डी crack। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, line of dehiscence। क्वेश्चन नंबर 89, there are 4 pollen sacs in monothecous anther. ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी false, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, false। क्वेश्चन नंबर 90, what are pollen sacs called? ऑप्शन ए pollen sacs, ऑप्शन बी microspores, ऑप्शन सी microsporangia, ऑप्शन डी ovules, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, microsporangia। क्वेश्चन नंबर 91, what is young anther made up of? ऑप्शन ए मेरिस्मेटिक सेल, ऑप्शन बी पैरेन्काइमा, ऑप्शन सी पोर्स, ऑप्शन डी सीड्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, मेरिस्मेटिक सेल्स। क्वेश्चन नंबर 92, what are the meristematic cells in young anther surrounded by? ऑप्शन ए पोर्स, ऑप्शन बी पैरेन्काइमा, ऑप्शन सी मेरिस्मेटिक टिश्यू, ऑप्शन डी एपिडर्मिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी एपिडर्मिस। क्वेश्चन नंबर 93, लेवल 1, ऑप्शन ए एज, ऑप्शन बी फिलामेंट, ऑप्शन सी स्टोमियम, ऑप्शन डी टैपेटम, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, स्टोमियम। क्वेश्चन नंबर 94, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडल लेयर, टैपेटम आर। ऑप्शन ए पोलन सेक्स लेयर, ऑप्शन बी वॉल ऑफ एंथर, ऑप्शन सी पोलन ग्रेन लेयर, ऑप्शन डी एपिडर्मल लेयर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, वॉल ऑफ एंथर। क्वेश्चन नंबर 95, लेवल 2, ऑप्शन ए वैस्कुलर स्ट्रैंड, ऑप्शन बी पोलन सैक, ऑप्शन सी पोलन ग्रेन्स, ऑप्शन डी मेरिस्मेटिक सेल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए वैस्कुलर स्ट्रैंड। क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट आर द 2 पार्ट्स ऑफ पोलन सैक? ऑप्शन ए स्पॉन्जी एंड पैरेन्काइमा सेल, ऑप्शन बी आउटर वॉल एंड सेंट्रल टिश्यू, ऑप्शन सी स्क्लेरेन्काइमा एंड पैरेन्काइमा सेल्स, ऑप्शन डी आउटर वॉल एंड पैरेन्काइमा सेल्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, आउटर वॉल एंड सेंट्रल टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 97, हाउ डज द आउटर 3 लेयर हेल्प यंग एंथर्स? ऑप्शन ए ऑस्मोसिस, ऑप्शन बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, ऑप्शन डी प्रोटेक्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, प्रोटेक्शन। क्वेश्चन नंबर 98, which 2 layer of the anther wall contain large cell? ऑप्शन ए एपिडर्मिस एंड एंडोथेसियम, ऑप्शन बी एंडोथेसियम एंड मिडल लेयर, ऑप्शन सी एंडोथेसियम एंड टैपेटम, ऑप्शन डी एपिडर्मिस एंड टैपेटम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एंडोथेसियम एंड टैपेटम। क्वेश्चन नंबर 99, what is the endothecium also called as? ऑप्शन ए वैस्कुलर स्ट्रैंड, ऑप्शन बी फाइब्रस लेयर, ऑप्शन सी मिडल लेयर, ऑप्शन डी हाइपोडर्मल लेयर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, फाइब्रस लेयर। क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट constitutes the stomium? ऑप्शन ए pollen sac, ऑप्शन बी हाइपोडर्मल सेल, ऑप्शन सी microsporangia, ऑप्शन डी मेरिस्मेटिक सेल्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हाइपोडर्मल सेल्स। तो आज का 100 क्वेश्चन हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में इसके आगे बात करेंगे। तो ये 100 का सीरीज चलता रहेगा। तो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।